इवनिंग सर। ओके यार अभिनव, आपकी मामा से मेरी बात हुई थी यार, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रखा है। मजा नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। अभिनव, यस सर। मैम कह रही तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो घर पे। ऐसा क्यों है अभिनव? सर मैं सर चैप्टर से रिवाइज करता हूँ सर। सर जो सर स्कूल से भाई आते सर मार्क्स तो रोटी नहीं आ रहे, अच्छे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। शी इज नॉट हैप्पी विद द मार्क्स एंड मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स बच्चे का ना, बिकॉज दैट द पैरामीटर ऑफ शोइंग हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन। क्यों नहीं आ रहे मार्क्स? मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो तो बता। सर कमी नोट्स तो में कोई नहीं है। कमी हो तो बताओ फिर। सर पहले सर मैं नोट्स नहीं करता था सर, अब मैं नोट्स शुरू कर दिया मैंने। तुम मेरे को नोट्स बना के जो लोग भेजेंगे ना, उनको देखना कितना बेनिफिट होने वाला है। तुम लोगों को अब सबको मैं पीछे पढ़ने वाला हूँ नोट्स बनाने के लिए। प्रभुगुण गुड इवनिंग। सभी लोग ने बस बोर्ड वाले नोट बना लो यार, ज्यादा मत बनाओ, बोर्ड के नोट बना लो बस। ओके ऋत्विक गुड इवनिंग। ठीक है, ऋत्विक गुड इवनिंग। ऋत्विक चंदेल। ऋत्विक तावरी। डाउट Yes. प्लीज। So first I want to tell you, sir, मेरे मैथ्स के मार्क्स आए सर 19 आउट ऑफ 20 आए. वेल डन अर्शिया, गुड ओके। 20 18 अपॉन 20 ओके। सर एंड मेरे भी 18 आए हैं। अर्शिया 18 ओके, चलो गुड। 18 ठीक है, 90% होता है 80 एंड 19 इज 95%। गुड शो गाइस। ओके या तो बताओ ऋत्विक अभी आगे। Yes, sir. So my doubt was, what are the side effects of tetanus on our body? Okay, I'll just tell you. Yeah, Ritvik Chandel. Okay, I hope Ritvik you have seen the video of yesterday's class. कंफर्म कर रहे हो ग्रुप में इसमें? नहीं नहीं। Ritvik Chandel, have you seen yesterday's video? ओहो, मिस होगी फिर क्लास। एनीवे आज देख लें ध्यान से। हाँ देखो, टेटनस क्या है मैं बताता हूँ। टेटनस व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी कट आवर फिंगर विद सम आयरन ऑब्जेक्ट एंड स्पेशली इफ इट इज रस्टी, then there is a chances of infection spreading in our body. Okay, Ritvik. Now that infection most likely normally it is in the bacterial form, and it is in a form in which there is a tetanus shot, there is an injection of tetanus, which not bacteria and I think virus ka bhi hai. I am not very sure, but some microorganisms enter your body and they start spreading the infection. If you take a tetanus shot or vaccine of tetanus, stays in your body for around 6 months, and it stops all those pathogens which are entering through that iron object. ठीक है ऋत्विक चंदेल, ऋत्विक तौरी। So does it affect our blood? वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट टू माय माइंड इट अफेक्ट्स, इट स्टार्ट्स द वुंड स्टार्ट्स डिटोरिएटिंग, इट starts becoming bad and bad and bad, and sometime amputation has to be done. Doctors have to cut your hands or something. Blood exactly, I'll research if it is required. Where did you read this? नहीं सर, कल सर मेरे को लगी थी पैर पे, तो सर पहले तो लगा कि कहीं आयरन से कटा क्या, तो बस ऐसे ही मेरे को लगा। तो तूने लगा पता कि अगर इंजेक्शन लगवाना है कि नहीं लगवाना है? नहीं सर, एंड में फिर सर रिसर्च करने के बाद सर फिर याद आया मेरे को कि सर पॉट से कटा था सर, बहुत ज्यादा कट आ गया था लंबा। सर आपका माइक म्यूट हो गया।
सर आपका माइक म्यूट। सर यू आर ऑन म्यूट। ओके सॉरी। टेटनस के लिए जो व्हाट आई कुड जस्ट सी ऋत्विक तावरे, एक बैक्टीरियम की वजह से होता है, एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है, और वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है हमारे। और जनरली होता है क्या है, लॉक हो जाता है, जैसे आपका जॉ है ना, ये लॉक हो जाएगा, आपसे खुलेगा नहीं अपना बाउंड, हाँ ऐसे नहीं खुलेगा, लॉक हो जाएगा। दिस इज द प्रिलिमिनरी, दिस इज प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, बट इट इज वर्थवाइल टू गेट योर इंजेक्शन। ओके गाइस, कल जो हमने पढ़ा था, जस्ट क्विक इसका बहुत फास्ट रिवीजन, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, ओके फास्ट रिवीजन। तो फाइबर्स किसको बोलते हैं हम लोग, जो फाइबर्स जो हमारे क्लोथिंग के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए जो काम आते हैं बेसिकली। तो इसमें प्लांट से हमें मिल रहा था कॉटन, प्लांट से हमें मिल रहा था जूट, और प्लांट से हमें मिल रहा था फ्लैक्स। ठीक है, इसके क्लॉथ बनते हैं, इसके बैग बनते हैं, प्लस जो फाइन होता है क्लॉथ बनता है, तो इसके बैग बनते हैं। फोर्थ था वुल, जो हमें थर्ड वाला क्या है? फ्लैक्स, FLAX, फ्लैक्स। ये जूट की तरह ही होता है, इसको पानी में भिगो देते हैं, पानी में कुछ टाइम सड़ जाता है तो उसकी रस्सी टाइप की बनती है, इससे बैग बनती है, रोप्स बनती हैं। ओके, वुल है, वुल मिलती है हमें शीप से, कैमल से, याक से, एंड देन यू हैव सिल्क which comes from silkworm. These are all natural. And we saw 4 synthetic fibers yesterday. Synthetic fiber क्या हुआ? I think sometime in 90s, 1990 something. A scientist what he did is he took wooden pulp, यानी लकड़ी जो wood होती है उसको बिल्कुल पीट पीट के उसका पल्प बना दिया। वुडन पल्प प्लस कोल प्लस वाटर, इसको उसने हीट कर दिया, और हीट करने से जो उसको प्रोडक्ट मिला, दैट इज कॉल्ड रायन। इट इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर। और मैं कल आप तुम्हें बताया था कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स है, दे आर ऑल पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर्स। इवन नेचुरल सेलुलोज इज आल्सो पॉलीमर। पॉलीमर के अंदर होता क्या है, इधर C6H12O6 into N, तो इनकी सीरीज बन जाती है। पॉलीमर होते क्या है पॉलीमर मतलब, मैंने कल तुम लोगों को एक डायग्राम भी दिखाया था। पॉलीमर मतलब ये कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये एक यूनिट है। मोनोमर, एक मॉलिक्यूल। पार्ट, मर मतलब पार्ट, ग्रीक वर्ड से आया, मर मतलब पार्ट, मोनोमर। एंड अगर ऐसी चेन बनती जाएंगी उनको बोलेंगे पोली। पोली मतलब मैनी, मर मैनी पार्ट्स। तो एक मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था, मैं तुम लोगों के साथ ये भी शेयर किया था कि रेयन के अंदर होता है C6H9O4, C6H9O4 एंड O एंड Na, सोडियम। ये एक मॉलिक्यूल है, फिर ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक बनता जाएगा। तो दिस वाज रेयन। नेक्स्ट वाज नायलॉन। नायलॉन क्योंकि नाइट्रोजन से बनता है, इसलिए इसके नाम में नायलॉन याद रखना आसान है। C12H12, C12H22, नाइट्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 2, N। इसका क्या था, इसका what did we heat? We heat coal, water and air. कोल से आ गया कार्बन, वाटर से आ गया H2O, और एयर से आ गई नाइट्रोजन N2। इसको हीट किया। सर एयर में तो और भी वो होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन भी लेते हैं सर? ये नाइट्रोजन लेगा ना, 78% नाइट्रोजन है, ओके कार्बन सर। डाइऑक्साइड तो 0.04% है, आर्गोन है समथिंग 0.6%, समथिंग लाइक दैट, 0.6% आर्गन। 4 ही कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, 4 मेन होते हैं, थोड़ी बहुत मिथेन भी ओके होता सर। है।
ये हो गया तो आपका बन गया नायलॉन। नायलॉन का एक और पॉइंट पढ़ा था हमने कि नायलॉन का अगर वायर ले लो और उसी थिकनेस का एक स्टील का वायर ले लो तो नायलॉन के वायर में ज्यादा ताकत होती है, नायलॉन का वायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, थिकनेस टू थिकनेस। ओके, ये पॉइंट ऋत्विक चंदेल आपने कल मिस कर दिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, उसके हमने एक बात देखा कि हमने देखा कि एक और केमिकल कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर जो कंपाउंड है इसके अंदर फ्रूट जैसी स्मेल आती है। ईस्टर जो कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूट जैसी। इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं ऐसे, और यहाँ पे आर, यहाँ पे कुछ भी दूसरा ऑब्जेक्ट लग सकता है बट नॉट हाइड्रोजन, बट नॉट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कुछ छोड़ के कुछ भी लग सकता है। ये तुम्हारे लेवल से ऊपर की चीजें हैं बट देख लोगे तो थोड़ा दिमाग में बैठने में आसानी रहेगी। सो ईस्टर ये होता है। लेकिन जब ईस्टर की बहुत सारी चेन बन जाएगी, पॉलीएस्टर बोले उसको, पॉली एस्टर, दिस इज ऑल्सो सिंथेटिक कंपोनेंट। सो COOR, ये एक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल चलते जा रहे दैट्स बिकम पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर को कई बार हम क्या करते हैं, पॉलीएस्टर के धागे ले लिए, पॉलीएस्टर का फाइबर ले लिया, पॉलीएस्टर ले लिया और साथ में कॉटन ले लिया, इनको ऐसे वीव कर दिया, अलग अलग रेशियो में करते हैं तो ये बनते हैं पॉलीकॉट, पॉलीकॉटन, पॉलीकॉट। और ऐसे ही आपने पॉलीएस्टर के धागे ले लिए और उसके बीच में आपने वुल डाल दी, वुल के साथ उसको मिक्स कर दिया तो हो गया पॉलीवुल। फोर्थ हमने पढ़ा था एक्रिलिक। एक्रिलिक वो है जिसके ब्लैंकेट बनते हैं, जो अपन एसी वेसी में जब सोते हैं तो उन ब्लैंकेट्स को यूज करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग मिंक ब्लैंकेट बोलते हैं। तो फोर्थ इज एक्रिलिक, एक्रिलिक। ये जैसे मैं बताया मिंक ब्लैंकेट, जो सॉफ्ट वाले आजकल ब्लैंकेट चल पड़े, कुछ कई साल से चल रहे, ये नेचुरल वुल से ज्यादा हल्का होता है और गर्म होता है नेचुरल वुल से हल्का। जैसे C5O2H8, C5H O2H8, O2H8, एक मॉलिक्यूल इतना होता है, फिर मॉलिक्यूल की लाइन बनी रहती है, तो दिस इज कॉल्ड एक्रिलिक। इसके अलावा हमने एक और वो देखा था, पेट बॉटल्स, जो प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, दैट इज ऑल्सो है सिंथेटिक फाइबर, इससे बॉटल्स भी बनती है और बाकी रोप्स वगैरह भी बनती है। बॉटल्स, जार, यूटेंसिल्स, नॉट रोप्स, यूटेंसिल्स, रोप्स के लिए नायलॉन का ज्यादा यूज होता है। ओके चलो, अब कल हमने देखा था सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सिंथेटिक फाइबर बेसिकली लाइट होते हैं वेट में, मॉथ नहीं लगती इनमें, क्योंकि मॉथ जो होते हैं वो कीड़े होते हैं, उनको तो नेचुरल सेलुलोज खाना है, वो नेचुरल कॉटन और सिल्क के कपड़ों को खाते हैं, इसीलिए हम लोग उसके अंदर नेफ्थलीन बॉल डाल के रखते हैं अपनी अलमारी में। लेकिन सिंथेटिक कपड़ों को वो लोग नहीं खाते। सिंथेटिक कपड़े रिंकल फ्री होते हैं, उसमें रिंकल नहीं पड़ते, ड्राई होने में बहुत फास्ट ड्राई होते हैं, क्योंकि पानी अंदर तक नहीं जाता, अंदर सोख कम पानी करते हैं, तो दे आर वेरी इजी टू ड्राई, दे डोंट नीड आयरनिंग। तो आई एम वेरी श्योर यू गाइस हैव वॉर्न ऑल दोज क्लोथ्स, तो हम लोग आज पे टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। एनी डाउट्स बिफोर वी गो अहेड? एनीवन? नहीं भाई, ऋत्विक, अर्णव, अभिनव, नो डाउट्स? नो सर। ओके, अभिनव मेरी शिकायत दूर होगी कि नहीं होगी अभी? सर हो जाएगी। करनी है भाई, तुम्हें, तुम्हारी लाइफ का सवाल है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें लगता होगा मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूँ,
जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाती हैं और तुम्हारे जो ये सब मैंने लाइफ देखी है और बड़े हाई लेवल पे देखी है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ सोच समझ के बता रहा हूँ, सिर्फ जस्ट आई एम नॉट सेइंग थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग। जैसे बहुत लोग बोलते हैं, अरे पढ़ ले तुम्हारी लाइफ का सवाल है, अरे फिर सो गए तुम फिर टीवी देख रहे हो। मैं तो बोलता नहीं ऐसे, ना मैं अपने बच्चों को भी बोलता, वो मुझे पता इट इज नॉट इफेक्टिव, बट व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू इज important, the insight is important for you. Okay, sure. Right guys, let me just open the notes and then we'll read. Anybody knows the meaning of this word? I'm typing a word. Don't Google it. If you know it, it's okay. Otherwise, how to pronounce this and what is the meaning of this? Chapter 3. Wait, anybody knows the meaning of this? Cliche. The pronunciation is cliche. Cliche उन वर्ड्स को बोलते हैं जिनका इतना यूज हो गया है, इतना यूज हो गया कि दे लॉस्ट देयर मीनिंग नाउ। तो इस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, माँ बाप बोलते हैं अरे बेटा तेरी जिंदगी का सवाल है। ये वर्ड को साला इतनी बार इस्तेमाल कर लिया गया है कि इसकी कोई वैल्यू खत्म होगी, बच्चों फर्क नहीं पड़ता। तो दीज आर कॉल्ड क्लीशेड वर्ड्स, क्लीशे। ओके चलो राइट। कल किस किसने नहीं पढ़ा, जस्ट गाइज आई वांट यू गाइज टू मेंशन इन दिस चैट बॉक्स, नॉट रेड। ओके जिया नॉट रेड, अभिनव और ओके सो जिया, अभिनव, अर्णव, सिया, ओके एनीबडी एल्स? अर्शिया, तस्मिया ने लास्ट में पढ़ा था, प्रभुगुण ने भी शायद थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। तो वील गो अहेड विद दिस, विल गो अहेड विद दिस। जिया, सीनियरिटी याद रखना प्लीज आपने, जिया, अभिनव, अर्णव एंड सिया एंड ऋत्विक, चंदेल, इफ यू कैन रीड। अर्शिया ने शायद से कल पढ़ा था, शायद से। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। श्रीका गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, sir. Sir, there was a problem in my that account. I don't know, but I tried from every account, but at last I had to create a new account. Then I joined it. ओके तो बेटा का मैं काम father करना, की चेक कर लेना साइबर सिक्योरिटी का मामला ना हो, कहीं कोई हैक वुक ना करने की कोशिश कर रहा हो। जस्ट yes, सी sir, योर sir. Sir, वो Google Meet से किया ही नहीं, मैंने मेल से ज्वाइन किया है क्लास। ठीक है चेक करना फिर। एनीवे वी आर जस्ट स्टार्टिंग। मैंने कल का रिवीजन कराया, जो कल रिव्यू कराया था, वीडियो तो देख लेना, और अभी वहां से आगे चल रहे हैं हम लोग। तुमने कल पढ़ा था श्रीका? यस सर। ओके ठीक है, सो विल गो इन द सेम सीक्वेंस लाइक आई टोल्ड यू गाइस, जिया, अभिनव, अर्णव, सिया एंड अर्शिया। लेट्स स्टार्ट। या मैं आई एम प्रेजेंटिंग दिस नोट्स। पॉलिएस्टर एक्रिलिक पढ़ लिया। यार ये पॉइंट जो है ना, इनको भी पढ़ना जरूरी होता है। एक बार इसको पढ़ना अपना जिया, ये चेक पॉइंट नंबर 1 के क्वेश्चन पढ़ना। Check point 1. First, out of yarn, cotton, nylon, and silk, which fiber is derived from chemicals? आंसर क्या होगा दोस्तों? Sir, nylon. नायलॉन इज ओनली वन हु इज कंप्लीटली सिंथेटिक, बाकी रायन भी सेमी सिंथेटिक है, उसमें वुडन पल्प यूज होता है। नेक्स्ट Second, क्वेश्चन पे। from where synthetic fibers are obtained? So answer to this is synthetic fibers are obtained by combining various chemical compounds in different proportions and then putting them through through chemical processes to finally obtain synthetic material. Third, name the man-made fiber made from the cellulose polymer. मैन मेड तो नहीं है, मैन ग्रो करता है उसको। नाम क्या हुआ? सर कॉटन। Cotton. कॉटन। सर कॉटन। ओके नंबर 2 पे आ जाओ भैया, ये भी पढ़ देते हैं अभी। या चेक पॉइंट 2। Check point 2. How is polyester fiber made? ओके सो आंसर यहाँ पे रहा, polyesters are synthetic fibers. They're actually made up of after repeating units of chemical called ester. So when ester
The acronym लिखते हैं substances smell like fruits are linked together in a chain. Polyester is created, a synthetic fiber. Next, Sir, it's pronounced as Easter or Esther. polyester प्रोनाउंस होता है. ईस्टर वो तो जो क्रिश्चियंस का त्योहार होता है उसको ईस्टर बोलते हैं. This is actually ester, polyester. Okay, sir. Okay, next है, yeah. What is the term? Which fiber is chemically identical to man-made fiber rayon? सिल्क पढ़ा था हमने, ध्यान है? ये देखो, rayon. Silk is natural fiber obtained from silkworm. Fabric contains from milk fiber very close, but the beautiful texture like thing towards the end. The fiber is obtained by chemical treatment. Woodwork can be called rayon or artificial silk. It has properties similar to that of silk. Okay. So the answer will be silk. For what the term PET is usually used, define this term. Okay. So PET is polyethylene tetraphthalate. याद करना है, कर लो इसको, polyethylene tetraphthalate, and this is used for making plastic bottles. It's a chemical compound used for making plastic bottles, jars, and utensils. Yeah, characteristics of synthetic fibers. Characteristics of synthetic fibers. Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress materials. Some important characteristics are given below. First, synthetic fibers are very strong and durable. Second, they absorb very little water, so dry up quickly. Third, these are wrinkle resistant and do not shrink. Fourth, these are quite lightweight and extremely fine. Fifth, these are less expensive and readily available. Sixth, clothes made from synthetic fibers are easier to maintain as compared to natural fibers. बस एक नुकसान बहुत बड़ा है इनका, लेकिन आएगा भी डिसएडवांटेज में. दे कैच फायर वेरी फास्ट. So if you are wearing synthetic clothes and you are working in kitchen, and a woman who is working in the kitchen, a lady working in the kitchen, तो थोड़ी सी भी अगर कहीं से फ्लेम लग गई, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं. तो that danger is very high, and we must be aware of this. एक वर्ड आया फाइन. फाइन का मतलब बहुत बहुत बारीक, बहुत पतले होते हैं. इनसे जो कपड़े बनते हैं उनका जो टेक्सचर होता है वो भी बहुत अच्छे लेवल का होता है. जैसे खादी यूज करो आप मोटे कपड़े की, तो उसका टेक्सचर उतना अच्छा नहीं होता, थोड़ा रफ लगता है, इसलिए इनका टेक्सचर कम होता है. ओके, आई थिंक उसके बाद अभिनव प्लीज रीड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. Yes, sir. Disadvantages of synthetic fibers. In spite of many advantages of synthetic fibers, there are some disadvantages also. There are given below. Synthetic fibers melt on heating. If the clothes catch fire, it can be disastrous. डिजास्टर्स They- मतलब बंदे की चिपक जाएगी बॉडी से वो, और बंदे को पूरा जल जाएगा. The fabric melts and sticks to the body to the person wearing it and causes severe burns. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or the laboratory. The clothes made of synthetic fibers are not suitable for wearing during hot summer weather, as these clothes do not have sufficient pores for the sweat to come out, evaporate, and cool our body. Due to this, clothes made up of synthetic makes us feel hot and uncomfortable during summer. Okay, I'll just explain this part because you have to understand the science behind this. So what happens is, now the point is summer versus synthetic clothes. So if you are wearing a cotton or naturally made fiber, naturally made fiber will have pores, and when you are wearing it, let's say you have sweated, so your sweat will come in contact with the pores, and these pores have capillary action. Capillary is a very thin tube, बड़ी पतली सी ट्यूब होती है,
और कैपिलरी की ये वो खासियत होती है कि अगर आप कैपिलरी ऐसे रख दो तो पानी उसके अंदर चढ़ना शुरू कर देता है, वाटर लिक्विड उसमें चढ़ना, खुद से चढ़ना, सरफेस टेंशन की वजह से। तो वाटर विल ट्रेवल अप फ्रॉम बिलो, इट विल कम अप ऑन टॉप, and there is a air going on here, wind is passing or breeze is going on. So because of the breeze, now the sweat will evaporate, and in that evaporation it will take heat away from your body, heat away from your body, क्योंकि इसको evaporation के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से सक करेगा? वो आपकी बॉडी से ही सक करेगा, आपकी बॉडी से हीट लेके evaporate हो जाएगा, heat away from body, and you feel cooler, you feel cooler. In case of a synthetic fiber, there are no pores. Pores are closed because these are very fine clothes and they will finely तो पसीना बाहर नहीं आएगा। पसीना बाहर नहीं होगा तो evaporation नहीं होगा, evaporation नहीं होगा तो कूलिंग नहीं होगी, बंदे को अनकंफर्टेबल लगता है सिंथेटिक कपड़ों में, सर्दियों में। ओके, या प्लीज कंटिन्यू नाउ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अभिनव, ये छोड़ दो, प्लास्टिक्स पे आते हैं। अच्छा दोस्तों, दो तरह के प्लास्टिक्स हम आपको बताएंगे, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मैं बताता हूँ पहले, बिफोर वी गो हेड, लेट मी जस्ट टेक अ पिक ऑफ दिस फर्स्ट। Okay, two terms related to plastics. That is the only important part of this chapter. Plastics. Thermoplastic. Second, thermosetting plastic. Now, the best way to understand this is thermosetting plastic is the plastic from which chairs are made. And thermoplastic is the plastic by which you make your polythene bag, plastic bottle. So what is the essential difference? On application of heat, अगर हीट अप्लाई किया जाए, इनको गर्म किया जाए, melts and changes shape. This one, this melts and changes shape. What about this one? Does not melt. May burn, but will not change shape. क्योंकि चेयर है, धूप में आपने चेयर रखी हुई है, बहुत तेज हीट है और चेयर पिघल गई, तो बंदा बैठा हुआ तो गिर जाएगा ना उस पर। तो इसीलिए इसके लिए जो प्लास्टिक यूज होती है वो डज नॉट चेंज शेप। बहुत ज्यादा हीट लगाओगे तो जल जाएगी, काली हो जाएगी, राख हो जाएगी, लेकिन चेंज नहीं करेगी शेप अपनी, पिघलेगी नहीं। एंड अदर वन इज थर्मोप्लास्टिक के द्वारा मेल्ट करके शेप चेंज कर देगी। हाँ जी, कंटिन्यू करें, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। अभिनव, ओके, अभी एक मिनट, अभिनव चलो आप थोड़ा सा और पढ़ो, अभिनव आपने बहुत कम पढ़ा है, वो है या ये प्लास्टिक्स।
इसका स्क्रीन लो रही है। आया स्क्रीन दिखा? नहीं दिख रही। Yes, sir. Plastic. We use a large number of particles made up of plastic in our everyday life. Example: plastic bags, water bottles, buckets, mugs, combs, toothbrush, toys, chairs, tables, covers of electric swigs, plugs, sockets, insulation of electric wire, water tanks, etc. इंसुलेशन Some इलेक्ट्रिक वायर, parts जो of वायर के ऊपर प्लास्टिक का जो कवरिंग रहता है, दैट ओके. Some parts of television, refrigerator, cars, buses, trains, aeroplanes, ships, etc. are also made up of various types of plastic. Plastic is a synthetic material which can be molded into desired shape when soft and then hardened to produce a desirable article with durability. Plastic is also a polymer like synthetic fiber. This means that plastic consists of very long molecules and made by joining many small molecules together. For this, the starting materials are obtained from petroleum products called petrochemicals. For examples of plastics are polythene, uh, पॉलीविनाइल poly, क्लोराइड, polyvinyl chloride, PVC, bakelite, मेलामाइन melamine, एंड टेफ्लॉन. Teflon, etc. ओके दोस्तों, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ. देखो, पॉलीथीन तो सबने देखी है, पॉलीथीन बैग आते हैं जो बैन कर रही है गवर्नमेंट, अभी वो होनी चाहिए. देन वी कांट पीवीसी. पीवीसी क्या होता है? जो पाइप होते हैं ना, जैसे कुछ घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होते हैं, या कहीं कहीं पानी के बाथरूम में पानी के लिए यूज होते हैं. जैसे एक पाइप आता है, उसका एडवर्टीजमेंट आज पहले सलमान खान करता था, अब शायद से रणबीर सिंह कर रहा है. वो पाइप जो दिखाते खेतों में पानी चल रहा है, पाइप लेके जा रहा बंदा, दैट इज कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड. बैकेलाइट तुमने देखा नहीं होगा, जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है ब्लैक कलर का, वो बैकेलाइट का बना होता है. मेलामाइन की प्लेट तो तुम लोगों ने देखी होंगी, जनरली घरों में बहुत यूज होती है. और टेफ्लॉन है आजकल की जो नॉन स्टिक वेयर आ रहा है, नया जो लेटेस्ट आ रहा है किचन वेयर में, उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग रहती है, तो उससे उसके अंदर सब्जी चिपकती नहीं, लगती नहीं, नॉन स्टिक बोलते हैं. थोड़ा सा घी डालोगे, थोड़ा सा ऑयल डालोगे, पूरे टेफ्लॉन हुआ. दीज आर सम एग्जाम्पल्स. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, I had a doubt. Sir, bakelite और melamine के मोनोमर क्या होंगे? मोनोमर पता नहीं, चेक करना पड़ेगा. बट व्हाई डू यू वांट टू फाइंड आउट दैट? सर, हमारे स्कूल में ये सब भी है, जैसे पीवीसी का मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन का है टेराफ्लोरोएथिलीन. ओके, इफ इट इज कवर्ड देन आई विल कवर इट. मेरे को एक मैसेज कर देना, इन नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द ओके कंप्लीट सर. लिस्ट कि किसका मोनोमर क्या है. इफ इट इज बीइंग कवर्ड वी विल डू ओके. ओके. दैट. राइट गाइस, नेक्स्ट किसका टर्न था अभी? आफ्टर अभिनव. अर्नव, अर्नव गो अहेड. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. ओह सॉरी. या Different structures of thermoplastics thermoplastics and thermosetting plastics. All plastics do not have the same type of arrangement of units. In some, it is linear, where in others, it is cross-linked. In thermoplastics, the long polymer chains are not cross-linked with one another, while in thermosetting plastics, the long polymer chains are cross-linked with one another. It is shown in figure given below. Okay guys, just pay attention to this. I'll just do a little bit of explanation. So पॉली थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर जो चेन होती है वो एक दूसरे क्रॉस लिंक नहीं होती. फॉर इसका एक एग्जांपल देख लो. कार्बन जो होता है ना, कार्बन, कार्बन के दो सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है. एक वर्ड होता है, उसको बोलता है एल्ट्रॉप्स. एल्ट्रॉप्स, एल्ट्रॉप्स होता है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए एलिमेंट बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. कार्बन के बहुत सारे एल्ट्रॉप्स हैं, उसमें एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज करते हो आप लोग. डायमंड का जो होता ये कार्बन है, इसके चार ये यहाँ बॉन्ड है, तो एक 3 बॉन्ड यहाँ बनते हैं कार्बन के, और एक नीचे वाले से बनता है.
एक नीचे वाली लेयर के साथ कार्बन का कंपाउंड बनता है, ठीक है। ग्रेफाइट में ऐसे नहीं होता, ग्रेफाइट में एक लेयर ये है, उसके नीचे एक लेयर है, लेयर आपस में फिक्स नहीं होती, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है। और बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस लिंकिंग, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। दैट इज प्राइमरीली द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके अंदर जो होता है वो क्रॉस लिंक नहीं है, नो क्रॉस लिंक, तो ये सॉफ्ट है, नो क्रॉस लिंक, एंड इट हैज क्रॉस लिंकेजेस, इसीलिए टफ होता है। ओके, हरना प्लीज कंटिन्यू। देख ये दिखा भी दिया इधर, तो लीनियर चेन इन थर्मोप्लास्टिक, क्रॉस लिंक चेन इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Okay, go ahead now. Types of Types of plastic. plastics. Plastics are of two types: thermoplastics. The plastics which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. Example: polythene or polyvinyl chloride (PVC). These plastics can be molded into different shapes again and again. It is flexible. Thermoplastics are used for making insulation of electric wires and cables. Various types of plastic containers, bottles, jars, etc., combs, toys, raincoats, packaging materials, etc. Note: polythene is a polymer of a compound known as ethene. It is used for making commonly used polythene bags. Polythene bags. Okay. Now let us see thermostatic setting plastics. Okay, read please. Thermosetting plastics. The plastics which when molded once cannot be softened by heating are known as thermosetting plastics. Example: bakelite and melamine. An article made up of thermosetting plastic will retain its original shape permanently even on heating. Thermosetting plastics are used for making Handles of cooking utensils. जो handles खासकर of cooking बेकेलाइट होता है. utensils, plates, cups, electric switches, plugs, rockets, telephone instruments, etc. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. So, it is used for making floor tiles, kitchenware, and fabrics which resist fire. फायर. तो मेलामाइन की प्लेट को आप जलाओगे ना, तो वो मतलब ब्लैक हो जाएगी, जल जाएगी अगर ज्यादा करोगे, लेकिन वो पिघलेगी. ओके, ये पॉइंट, चेक पॉइंट पढ़ना एक बार. Yes, sir. Checkpoint 3. Choose the thermoplastic and thermosetting plastic from the following: melamine, PVC, polythene, nylon, bakelite. बेकेलाइट. ओके, सो मेलामाइन थर्मोसेटिंग, पीवीसी थर्मोसेटिंग, पॉलीथीन थर्मो, nylon thermo, bakelite thermosetting. तो only polythene and nylon are thermoplastics, बाकी तीनों की तीनों Sir, excuse thermosetting. me, sir. Sir, PVC thermoplastic है. थर्मोप्लास्टिक है, तो उसी पाइप को Yes, अगर sir, हम सर अभी हमने पढ़ा था. जलाएंगे, सर पीवीसी पॉइंट नंबर 30 थर्मोप्लास्टिक में होगा. लिख रखा है सर, ओके, पॉलीविनाइल ठीक है, क्लोराइड. ठीक है, ठीक है, ठीक. मे बी आई मिस्ड इट. ओके, सो पीवीसी इज अगेन अ थर्मोप्लास्टिक. सो इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें, पीवीसी, पॉलीथीन एंड नायलॉन आर थर्मोप्लास्टिक्स, मेलामाइन एंड बेकेलाइट आर थर्मोसेटिक. ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ें. Which is better material for constructing handle of a pressure cooker, a thermoplastic or a thermosetting plastic? नेचुरली थर्मोसेटिंग. अच्छा, सेट का वर्ड ऊपर में लिखा, सेट का मतलब वो चेंज नहीं होता, सेट हो गया, वो अभी चेंज नहीं होगा, सेट हो गया. सो अगर हम थर्मोप्लास्टिक यूज करें तो पिघल जाएगा जब प्रेशर कुकर की हीट से, हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, हैंडल को यूज नहीं कर पाएंगे. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक स्विचेस? हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए? Sir, वंश. thermosetting and Thermosetting. थर्मोसेटिंग. thermoplastics. Thermo ताकि कई बार क्या होता है, हीट हो जाती है, थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं वायर और सॉकेट, तो वो पिघल ना जाए, और पिघल गया तो वायर एक्सपोज हो जाएगी, जो मेटेलिक पार्ट एक्सपोज हो जाएगा, हम लोगों को करंट लग जाएगा. ओके, अर्शिया, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, यहाँ से शुरू करें. what are the reasons plastic has become so popular in the last around 30-40 years? Yes, sir. Plastic as material of choice. Due to various qualities and useful properties, plastic are the material of choice for all sorts of use. Plastic has many advantages over the traditional material like metals, woods, etc. Some important characteristic property of plastic are given below. First,
Plastic is non-reactive. Metals like iron get rusted when left exposed to moist and air, but plastic do not react with water and air. They are not corroded easily. So they are used to store various kinds of materials, including many chemicals. Second, plastic is light, strong, and durable. Plastic is lighter than metal due to its low density. So plastic is used in cars, aircraft, and spacecrafts. It has good strength and durability, long lasting. Due to low price, easy availability, lightweight, good strength, durability, and corrosion resistant, plastic containers are preferred for storing food, water, milk, jams, pickles, and soft drinks, etc. Third, plastic can be molded into different shapes. Plastic can be easily molded, so they are used to make variety of articles having different shapes and size, such as chair, table, bucket, mugs, combs, toys, etc. Fourth, plastic is quite cheap and easy available. Plastic is generally cheaper than metals. Also, it is easily available. Due to these properties, plastic are widely used for making many of the household and industrial articles which were earlier made from metals. Example bucket. Plastic are poor conductor of heat and electricity. Plastic are poor conductor of heat. So handles of cooking utensils like frying pans and pressure cooker are made up of plastic so that we can hold the hot utensils safely without getting our hands burned. Plastic are poor conductor of electricity. So electric wires have plastic covering and handles of screwdrivers used by electricians are made up of plastic so as to protect us from electric current passing through them. Electric switches, plugs, and sockets also have plastic covers due to these properties. सर आपका सर आपकी माइक म्यूट है म्यूट है. Okay, I think there's only one point I need to explain to you. Otherwise, बाकी सारा self-explanatory है. So, plastic jar, and especially for storing pickles. You would see तुम्हें स्टोरिंग पिकल के लिए प्लास्टिक के जार मिल जाएंगे या फिर चाइना की चाइना जार हो जाते हैं. चाइना जार क्या बोलते हैं उनको? दिस इज कॉल्ड व्हाट इज द वर्ड यूज्ड फॉर इट? चाइना सिरेमिक डिश. सिरेमिक 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 के जार जैसे पुराने जमाने होते थे. कभी भी तुम्हें मेटल नहीं मिलेगा. नो मेटल जार्स आर यूज्ड. उसका रीजन ये होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. व्हाई डोंट वी यूज मेटल जार्स फॉर स्टोरिंग पिकल? व्हाई ओनली प्लास्टिक जार्स आर यूज्ड और सिरेमिक जार? नो मेटल जार. रीजन क्या होता है? जार किसका होगा तुम्हारा? कॉपर का हो सकता है, So basically metal. एल्यूमिनियम का हो सकता है. हाँ, मेटल एल्यूमिनियम का हो सकता है, आयरन का हो सकता है. दिक्कत क्या है कि सारी की सारी मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद पिकल्स के अंदर क्या होता है? एसिड होता भी है और हम यूज भी करते हैं. क्यों? सो दैट दे डोंट गो बैड. पिकल्स के अंदर एसिड यूज होता है और मेटल्स एसिड व्हेन दे मीट दे विल क्रिएट अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ आपका जो 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 पिकल है, द पिकल विल गो बैड. पिकल विल बिकम bitter and bad. So that is one reason we are not used. Yes, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. Why plastic jars are not? Why plastic jars are used for storage of pickles and not metal jars? Okay. Right. अर्शिया के बाद लेक्चर दोबारा राउंड शुरू करते हैं. सिया, वेयर आर यू? सिया, प्लीज गो अहेड विद दिस. Okay, Shrika. Yes, sir. Shrika, after Sia, you will read. Okay, Shrika, sir. some other uses of plastics. Yes, sir. Some other uses of plastics. First, in healthcare industry, plastics find extensive use in the healthcare industry. They are used in packaging of tablets,
making threads used for stitching wounds, syringes, doctor's gloves, and a number of medical instruments, as, as special plastic cookware in microwave ovens. Special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food. In microwave ovens, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. For non-stick coating on cookwares, Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick coating on cookwares. Fireproof plastics. Although synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. ओके, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट आगे पढ़ना. Yes, sir. Plastics and environment. In our daily routine, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. So plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, the plastic wastes are dumped along the household garbage. The use of plastic materials affect the environment very badly. It is because of the following reasons. 1. Plastic is non-biodegradable and causes environmental pollution as it takes several years to decompose. It is not environment friendly. Second, when the plastic waste materials are burnt, they are burnt very slow. They do not get completely burnt. In the burning process, they release a lot of poisonous fumes, gases into the atmosphere, causing air pollution. Sometimes the animals, like cows, eat uh, eat up the polythene bags and wrapper the food along with the leftover food thrown on garbage dumps. The plastic materials choke the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomachs and can be cause of their death. ओके, होल्ड कर, सिया सिया होल्ड कर. बहुत बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है. कहाँ से आ रहा है? सर वो एक्चुअली मैं मेस में रहती हूँ ना तो ऊपर एयरप्लेन्स चले आते हैं. अच्छा अच्छा, यू शिफ्टेड देयर. ओके, ठीक है. राइट. लास्ट पॉइंट और पढ़ दे, ये वाला, द पॉली बैग्स. Yes, sir. The poly bags and the wrappers of chips, fruits, and other eatables on the roads, in parks, or at picnic places carelessly thrown here and there get into dirty water drains and sewers and block them. This makes the dirty drain water to flow over the streets or roads, causing many diseases. ओके, दो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है यार, बाकी तो तुम लोग रट लोगे, मतलब कुछ मेमोराइज करने वाली बात है, बट दो मेजर इश्यूज है. पहला, प्लास्टिक जो है नेचुरली डिटेरिएट नहीं होती. नेचुरली इट डज नॉट डिग्रेड इनटू द simpler substances. For example, you have a natural fiber cloth. It will decompose after some time, and will convert into the bacteria will convert it into carbon, hydrogen, oxygen. So that is does not happen with the synthetic fibers and the polythene packaging material. It does not degrade. It takes some millions of years to degrade or something like that. And second issue is blocking of drains. All the polythene packing stuff, it gets into the drain and it blocks the drain. Now the water is coming. Let's say there is a rain. There are drains created for moving of rainwater. Now rainwater, the drain is clogged and packed with all this stuff, which is useless stuff, which is lying there, stuck there. So now water will come out of the drain because it's not passing through the drain. It will come on the street and it will flood the entire town or city wherever. So that's a big problem in Bombay and Delhi and such like places. Okay. Right. Shrika, I'm sharing. This is the last part of this chapter. Let's complete this. Yeah, go ahead. Biodegradable and non-biodegradable. Arshia, मेरे को message करना. I will give you the tomorrow's class. I'll share with you and explain to you the monomers of bakelite, melamine and polyvinyl chloride तो हो गया. I think एक दो जो भी बचे हुए. Okay. Okay, sir. श्रिखा, आप पढ़ें. Biodegradable and non-biodegradable materials. A material which gets decomposed through natural processes such as an action by bacteria is called biodegradable material. Example, plants wasted such as peels of vegetables and fruits, fallen leaves, leftover of foodstuffs, etc. Animal wastes
paper, jute, wood, cotton, and woolen clothes, etc. They do not cause environmental pollution, so they are environment friendly. A material which is not easily decomposed by natural processes is called non-biodegradable. Example: plastics, glass, tin, and aluminium cans, etc. They cause environmental pollution, so they are not environment friendly. Friendly. Okay, continue please. So time taken यहाँ पे मैं बता देता हूँ. Time taken to degenerate and decompose. Uh, Vegetable peels 1 to 2 weeks. Paper 10 to 30 days. Cellulose से बनता है. Paper is mainly made up of wood pulp. Cotton cloth 2 to 5 months. Wool 10 to 15 years. Woolen clothes about a year. Tin, aluminum, other metal can 100 to 500 years. Plastic bag even more than that. So that is why this is a big problem. Biodegradable में बाकी सब आ जाएगा, लेकिन metals and plastic नहीं आएगी. Okay, how do we save our environment? Shrika, please continue with this. ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में 2 marks 2 3 marks का. Please prepare this. Measures to save the environment from harmful effects. As a responsible citizen, we should take some steps to save the environment from harmful effects. Causes of excessive use of plastics. These are as follows. 1. We should avoid the use of plastics as far as possible. Use other materials in their place. Example: we should use bags made up of cotton, jute, or paper for shopping instead of polythene bags. Similarly, we should use a steel lunchbox instead of a plastic one. Second, we should collect biodegradable and non-biodegradable wastes separately and dispose of separately. Dispose of separately. Okay, just one point here. See what happens is a lot of people use plastic material in microwaves. So the issue with with the use of plastic is firstly plastic is made up of such stuff. It does not absorb the EM radiation, which is the electromagnetic radiation which is used in the microwave ovens. So that's why if you put a metal container in the microwave container, it will absorb the EM Containers radiation. which come with jams, pickles, and other packed food materials for storing kitchen items like salt, sugar, etc. Okay. Okay, Shrika, continue please. Continue. I have shared. Yeah, go ahead. Shikha, Yes, sir. continue. Sorry, sir, I got disconnected. Yeah, continue, please. We should use the plastic containers which come with jams, pickles, and other packed food materials for storing kitchen items like salt, sugar, etc. Also, we can reuse the plastic carry bags for shopping again instead of throwing them in dustbin. Fourth, we should not throw polythene bags, wrapper of chips, biscuit, and other eatables in water bodies or on the roads. They should be put in dustbins provided at various places. Fifth, most of thermoplastics can be recycled, so we should collect the plastic waste from homes, shops, and industries and send to plastic making factories for recycling and to make new plastic articles. During recycling, certain colors are added, so we should avoid its use of storage of food. Because otherwise the color chemicals will seep into your food, which is harmful for us. We should remember the 4R principle: reduce, reuse, recycle, recover. इसमें कई कई R जुड़ते रहते हैं, कभी कम होते रहते हैं. So whatever your teacher tells you, use that. All right, guys. With this, we finish this chapter. Tomorrow we're going to start chapter force and pressure, chapter 11. Please prepare well. In coming days, probably we will have quiz of combined chapters together. And any doubts, please ask me. But I want you to make these notes and send them in the group to me. Everyone. That's for everyone. All right. We meet tomorrow with a new chapter, guys. Bye bye. Any doubts? Ask me tomorrow. And Arsha, send me that message. Bye, Okay, everyone. sir. Bye. Bye. Bye, Bye. sir. Bye, sir. Bye, Thank sir. you. Thank you, sir.